A very good morning to all my lovely Patans. So, I am back with your computer class and I hope you all are doing good. So, in the last class, we have discussed about the components of Scratch window and about its different blocks. So, today we are going to do the project Make a Circle, and after that I will tell you how to save a project. This I have already told you yesterday, but today also I am going to tell you again so that you will remember. And after that we'll do the book exercise and some definitions in your computer notebook. So let's start the topic. So now we'll start the topic. प्रोजेक्ट मेक द कैट ड्रॉ सर्कल. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग. ये मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने एट दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू. सो विल डू अगेन. सो दिस इज़ योर कैट स्प्राइट. हमें इसको मूव कराना है लाइक इट विल मेक अ सर्कल शेप. ओके, सो यू ऑल नो नाउ दिस राइट साइड इज़ योर स्क्रिप्ट एरिया. सो बेसिकली मैंने आपको बताया था आप किसी भी ब्लॉक पे क्लिक करोगे इट विल कीप ऑन द स्प्राइट विल मूव अकॉर्डिंगली. जो भी आप ब्लॉक यूज़ करते हो तो अकॉर्डिंगली द स्प्राइट विल शो द एक्शन. ओके, बट if one by one we are clicking on the blocks it is not a program. okay, प्रोग्राम क्या होता है जिसमें एक सेट होता है, कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. जैसे कल हमने अलग अलग स्प्राइट के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट लिखी थी. ओके, सो लाइक दैट वी हैव टू मेक अ प्रोग्राम जिसमें एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का जिसे हम प्रोग्राम बोलते हैं. ओके, सो फर्स्ट we have to, this is already in the motion block. okay, so now अब हमें इसको रोटेट कराना है, मीन्स टर्न कराना है. so for that what we will do, take the turn 15 degree block and after that उसको साथ साथ हमें आगे भी मूव कराना है. so move 10 steps. नाउ अब हमें सर्कल ड्रॉ कराना है. तो लाइक आई ऑल्सो टोल्ड यू अर्लियर कि व्हेन यू राइट डाउन इन योर नोटबुक यू डू द पेंसिल डाउन एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग. तो जब आप पेंसिल डाउन करते हैं उसके बाद आप राइटिंग स्टार्ट करते हैं. जैसे ही आप का कंप्लीट हो जाता है यू विल टेक द पेंसिल अप. ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे जब हमें स्प्राइट से सर्कल ड्रॉ करवाना है so what we will do, we'll make the pen down. okay, so we'll click on the pen block and here we have pen down. okay, so now we have done the pen down. अब पेन डाउन एज यू विल सी इन योर बुक, आपकी बुक में पेज नंबर 52 पे जो स्टार्टिंग में पिक्चर दी है आपकी कैट की which has made a circle, you can see here this circle. इस सर्कल की आप थिकनेस देख सकते हैं ज़्यादा है, तो हमें अकॉर्डिंगली पेन की थिकनेस जो है वो सेट करनी है. सो सेम हेयर यू कैन सी इन द पेन ब्लॉक. यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट पेन साइज और कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं. so here you will see set pen size. okay, so इसको हमें करना है it is 1, so click here and make it 20. okay, इसको हमें 20 करना है. you can focus here. 20 we have done. now if you want to set a particular color, अभी देखो like it is green color, so set pen color. just wait.
अगर हमने चेंज करना है पेन का कलर हम वो भी कर सकते हैं। ओके अगर आपको एक ही कलर का रखना है सो यू कैन skip this step. Now अब ये आपके देखो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गई। वी हैव पुटेड 5 इंस्ट्रक्शंस, हमने 5 ब्लॉक्स यूज़ किए हैं। मीन्स एक ये कंप्लीट एक सेट हो गया, ये कंप्लीट एक प्रोग्राम हो गया। तो हम ये सिंगल किसी पे भी क्लिक करेंगे तो जो ये कंप्लीट प्रोग्राम कंप्लीट इंस्ट्रक्शन हमने दी है, ये सारी इंस्ट्रक्शन आपकी रन होंगी बिकॉज हमने सारे ब्लॉक्स को ज्वाइन कर दिया है। तो आप किसी भी ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो इट विल रन, आपका प्रोग्राम वर्क करेगा लाइक यू कैन सी। will make it will place the when clicked flag so it will be easy for us. Now just click on the green flag. so जितनी बार आप क्लिक करोगे it will move, बट अगर आप चाहते हो कि इट विल कीप ऑन मूविंग तो मैंने क्या बताया था, यस कंट्रोल ब्लॉक में जाके विल यूज़ विच ब्लॉक, वेरी गुड, फॉर एवर ब्लॉक। सो हम इसको फॉर एवर ब्लॉक में पुट कर देते हैं एंड हेयर इट विल गो। नाउ क्लिक ऑन द फ्लैग, सी इट इज़ वेरी कलरफुल ना, लाइक अ रेनबो। So this is how you have to make this project, to make a cat to draw a circle. Okay, now how to save it, who will tell now? I have told you already. Yes, who will tell me? Yes, Ansh, tell. Okay, very good. Click on the file menu, then click on save. Now here we have to give the file name. You can see the file name here. तो यहाँ पे हमें फाइल का नाम देना है. So we'll write circle shape. Okay, and I told you that whatever project you will make in Scratch, it is saved with the extension .sb2. जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारी एक्सटेंशन होती है .docx, सो यहाँ हमारी एक्सटेंशन है .sb2. ओके, सो आफ्टर राइटिंग द फाइल नेम यू हैव टू सिलेक्ट वेयर यू वांट टू सेव इट. आपको डॉक्यूमेंट में सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, डाउनलोड्स में, म्यूज़िक में, वेयर एवर यू वांट. आई एम सेविंग इट पठानिया वर्ल्ड कैंपस and then click on save button. Now you can see the name here, name is here circle shape. Okay, so this way you can make this project, and as I told you, by clicking on this tips menu on the right side you will have a samples जो आप यूज़ कर सकते हैं to understand and how to work on Scratch. यहाँ से आप कर सकते हैं. You can take the idea, you can take the help step by step. Okay, so just try it and you will find it very interesting. Okay, so now we'll come to the book exercise. So here is your book exercise. So first of all, everyone take out page number 55 and just write down the date here, 30th of October 2020, and write down class work. Okay, now first is tick the correct answer. First one, Scratch projects are made up of objects called dash. तो स्क्रैच प्रोजेक्ट किससे बने होते हैं? योर ऑप्शंस आर स्प्राइट्स, कॉस्ट्यूम्स, बबल्स. सो द आंसर विल बी
Yes, Gunika, the answer will be very good, sprites. So just tick on the block given in front of sprites. Okay, so everyone just keep doing with me, and if anyone will have any doubt, you can raise the hand. Now next, dash shows all the blocks available to you for use in programming. So आपको सारे blocks कहाँ available होते हैं? What we call that place? Toolbar, blocks palette, menu bar. So what will be the answer? Yes, tell me the answer. Yes, Aditya, the answer is blocks palette. Very good. So tick on the box given in front of blocks palette. Now come to the third one. The default sprite present in the Scratch is dash. So by default कौन सी sprite होती है? Dog, cat, mouse. This is very easy. Everyone should know this answer. Yes, the answer is cat. So just tick on the box given in front of cat. Now come to the fourth one. Dash blocks are used to determine the location of the mouse pointer and its distance from other sprites. So which block is that? जिससे हम डिटरमाइन करते हैं आपके माउस पॉइंटर की लोकेशन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अदर स्प्राइट्स. Yes, Advik, the answer is sensing. Very good, keep it up. So tick on the box given in front of sensing. Now come to the fifth one. Dash tool is used to make the sprite bigger. So which tool we use to make the sprite bigger in the toolbar? Grow, shrink, duplicate. Tell me the answer. Yes, Varnika, the answer is grow. So tick on the box given in front of grow. I hope everybody has done. Now come to the true false. First is blocks menu displays list of 10 categories of color coded blocks. So आपके ब्लॉक को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? 10 categories and they all are color coded. So this one is true. So in the first box write down capital T. Now second one, green flag is used to start your main program. So green flag हम कब use करते हैं? To start your main program. Yes, tell me. Yes, Naksh, very good. The answer is true. So in the second box we'll write capital T. Now come to the third one. Tabs allow you to see and change the current sprite. Tabs allow you to see and change the current sprite. So who will tell? Give the answer now. Yes, Lakshita, very good. The answer is true. So write down capital T in the third box. Come to the fourth one. The move 10 steps block moves the cat in the direction of its face. So जब हम move 10 step block यूज़ करते हैं तो आपकी जो cat है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है? In the direction of its face. So this is also true. So write down capital T in the fourth box. Keep doing with me. Now come to the fifth one. To run the program, click outside the joined up blocks of script. To run the program, click outside the joined up blocks of script. So अगर आपको प्रोग्राम को रन कराना है तो जो भी आपको ब्लॉक्स आपने ज्वाइन किए हैं तो उनके आप आउटसाइड क्लिक करेंगे. So is this statement true or false? Just tell.
Yes, the answer is yes, tell me the answer. To run the program, click outside the joined up blocks of script. So this is false because हमें outside नहीं, हमें blocks पे click करना होता है. So write down capital F. Now the sixth is the file extension of Scratch is .ab. तो स्क्रैच की एक्सटेंशन क्या बताई थी मैंने आपको अभी कुछ देर पहले? .sb2. So this is false. So write down capital F in the last box. Now those who have completed, just turn your page, come to page number 56. We'll do the fill-ups now. So now is fill in the blanks. First is the dash is a place where you can make your programs in Scratch. So हम अपने programs कहाँ बनाते हैं? Where we used to give the instructions. Yes, Vanshika. Yes, very good. The answer is script area. So everyone just write down script area in the first fill up. Now come to the second one. To run the program, click any of the dash blocks in script area. So किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको क्या करना होता है? Where you have to click? Just click any of the joined up blocks. So right here joined up blocks. Now come to the next one. Dash is a small character that performs action on the stage. So जो भी प्रोग्राम आप राइट डाउन करते हो उसको परफॉर्म कौन करता है? एक्शंस को, जो भी इंस्ट्रक्शन आप देते हो स्टेज एरिया पे क्या होता है जो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है? गिव मी द आंसर. यस केशव, वेरी गुड. द आंसर इज स्प्राइट. So just write down sprite in the third fill up. Now come to the fourth one. Dash block is used to leave a line behind wherever sprite moves. So which block we use to leave a line behind? ताकि जैसे जैसे आपकी स्प्राइट मूव करे वैसे वैसे उसके पीछे लाइन भी ड्रॉ होती रहे. So for that which block we use? Yes, Shubham, the answer is pen down. So write down pen down in the fourth fill up. So everyone has to write in a neat and clean handwriting, okay? Now those who had done, just take out your computer notebooks, write down today's date, chapter name, and then leave 2 lines, write down D part, define the following. Define the following. This D part we will do in the computer notebook, okay? So now first is computer language. So हमें computer language को define करना है. So computer language is a special language which is understood by the computer, and it consists of a set of words, symbols and codes that are used to write a computer program. Okay, so we'll write here it is a special language understood by the computer, and it consists of a set of words, symbols
and codes that is used to write a computer program. To write a program. Okay. So everyone just write it down. Next is script area. So we'll write here, it is a place where we can make programs it it is a place where we can make programs by dragging the blocks from the blocks palette. So everyone just write it down. Just correct the spelling of palette. Okay. Now the next is program. So a program is a set of repeatable instruction to carry out a particular task. A program is a set of instructions to carry out a particular task. Or we can write a program is a set of instruction to get a particular task done. Okay, so everyone just write it down in your notebooks, and you have to write in a neat and clean handwriting. Okay, after you will finish in the last 5 minutes, I am going to check your notebooks. Okay, so everyone just complete your work in your computer notebooks and book as well, and keep revising the chapter 7 and 8. And if you have any doubt related to any of the chapter which you have completed, chapter 7, chapter 8 or chapter 5, I am here to help you. Till then, take care, stay safe, bye.